Hello guys, welcome to the lecture of Advanced Reasoning 2. So like Advanced Reasoning 1, in this lecture as well, we are going to deal majorly with reasoning part. It's not much about grammar and उसकी बारीकियां हमें यहाँ पे नहीं देखनी है. We are more concerned about reasoning. But yes, why is it then asked in verbal ability? Because you need to focus on every word. Any word may just change the direction of the question and answer. So let us start. We are going to do two things today, arguments and probably true, probably false. These are the two types of advanced reasoning questions that we will deal in this session. So let us begin with arguments. So in argument questions, basically two arguments are given after an issue which is raised in the question. One will begin with yes. So any random issue will be given. Let's take an example. Should reservation be continued or not? Okay. So this is an issue. All right. So Nietzsche they will give you a option which starts with yes and the reason. Then there will be another option which starts with a no, and then there will be whatever reason is given. You have to evaluate each argument and choose your answer. So these are going to be your options. Option number one, if only first argument of yes is right. Argument, if only argument second, which is no is right, your answer will be option number two. If you think both the arguments are right, your answer will be option number three. And if both are wrong, your answer will be option number four. Yes, even if they are contradictory, yes and no, फिर भी दोनों भी right हो सकते हैं. Because this is not a biased answer, it's more about technically क्या सही है क्या गलत है. तो आपको आपका नजरिया नहीं बताना है. So let us look at this example. Population, should there be compulsory family planning in India? Okay. So basically हम population को मद्देनजर रखते हुए ये सोच रहे हैं कि इंडिया में compulsory family planning होनी चाहिए या नहीं. सबसे पहले बोला है yes because this is the only way to make people belonging to certain religion restrict the number of marriages. Second is given no because any compulsion in this respect would be against the democratic setup that we have in India. Now, आपको क्या लगता है वो आपको यहाँ पे नहीं पूछा गया है because think about it. So many students are going to give the exam. सबको अलग अलग लगेगा. How can that be the right answer? Right. So यहाँ पे you're just going to focus on the reasoning what is given. पहला वाला गलत हो जाएगा because it is targeting certain religion. Okay. Even if you may believe कि ये सही है, doesn't matter. अगर आप रैशनली देखो तो वो गलत है. दैट इज वाई इट कैन नॉट बी योर आंसर बिकॉज दे आर सेइंग सर्टेन रिलीजन ब्ला ब्ला ब्ला. Second one is right because it is saying that any compulsion in respect would be against a democratic setup. So second sahi hai. So answer will be only two is forceful. I hope you have understood how to solve arguments. So each argument should be evaluated on its own strength and on its own merit. Relatively nahi. आपको ये नहीं देखना है कि अरे पहला वाला सही है इसलिए दूसरा वाला गलत है या पहला वाला ज्यादा सही है. आपको उन दोनों को कंपेयर करना ही नहीं है. यू आर सपोज टू जस्ट सी देम इंडिविजुअली. अगर आपको इंडिविजुअली वो सही लगते हैं देन दैट्स इनफ. ऑल्सो फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट शुड डायरेक्टली एड्रेस द इशू रेज्ड इन द क्वेश्चन. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में अलग ही प्रॉब्लम दिया है, आपका आर्ग्यूमेंट कुछ अलग ही सॉल्यूशन दे रहा है. सो जो क्वेश्चन में इशू है उसी के बारे में आपकी आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए. इट शुड बी वेल प्रेजेंटेड. मतलब जैसे अभी दिया था सर्टन रिलीजन वगैरह वगैरह, ऐसे सब चीजें नहीं बोल सकते. यू कैन टारगेट. नेक्स्ट इज इट शुड बी रैशनल. इट शुड कन्फर्म टू सिस्टम विच मीन्स कुछ भी इमेजिनरी सिनेरियो नहीं होना चाहिए. इट शुड कन्फर्म टू द वर्ल्ड वी लिव इन. एंड अबव ऑल इट शुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन. ऐसे ही कुछ भी रैंडम मोटिवेशन अगर इसमें आ गया देन दैट विल नॉट बी आंसर. ओके. So I hope you have understood this. Now we are going to come back to probably true, probably false later on, because before this I want you to immediately practice the argument thing that we have just learned. तो हमने अभी अभी argument learn किया तो पहले हम उसे practice कर लेते हैं. ठीक है. चलो. सो अगेन मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगी. ठीक है. जैसे अभी ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है दैट्स योर क्वेश्चन राइट. एंड नीचे दो आर्ग्यूमेंट्स दिए रहेंगे जैसे आपको दिख रहे हैं. एंड आप बताओगे कि इन दोनों अगर आपको लगता है कि ओनली लेट्स से फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सही है तो योर आंसर विल बी वन ओनली. अगर आपको लगता है सिर्फ सेकंड सही है तो आंसर विल बी सेकंड. अगर आपको लगता है कि दोनों सही है तो योर आंसर विल बी
3 एंड अगर आपको लगता है दोनों गलत है your आंसर विल बी 4. ओके, आई होप इट्स वेरी क्लियर. फिर भी आपके लिए मैं बता लिख देती हूँ नीचे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सॉल्विंग दिस. ओके, ठीक है, चलो ट्राई दिस. All right, so now, should there be a uniform civil code for all religious communities in India? So UCC होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले आंसर विल बी yes, because UCC ना, सबसे पहले तो आप समझो UCC क्या है. UCC इज सबके लिए सेम लॉ. अभी अगर आप देखो तो इंडिया में सबके लिए सेम लॉ नहीं है. एवरी रिलीजन फॉलोज इट्स ओन लॉ, सेम सिविल लॉ. So there is no same law for everyone, right? So this is saying कि सबके लिए सेम लॉ होना चाहिए. तो फर्स्ट वन सेज दैट यस बिकॉज उससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा एंड सब अलग अलग लॉज फॉलो नहीं करेंगे. सेकेंड बोल रहा है कि नहीं बिकॉज इट्स गोइंग टू बी कॉन्ट्ररी टू सेक्युलरिज्म. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री गाइस, वी डोंट हैव एनी स्टेट रिलीजन, हम सर्वधर्म समभाव पे चलते हैं. तो फर्स्ट वाला जो बोल रहा है दैट यू नो यूसीसी होगा तो अच्छी बात है, सब सेम ही लॉ फॉलो करेंगे, वो भी तो सही है. सेकेंड बोल रहा है यूसीसी जो है सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा बिकॉज सब फिर if you are saying that there is no state religion then why are you imposing any law on us. So दोनों भी सही है यहाँ पे, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों में से कोई भी कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है. that's why your answer will be 3 which is both. ओके, तो ये तो ठीक है, ये वाला टॉपिक शायद आपको इतना नहीं पता था. लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन. यस, ट्राई करो सॉल्व इट ऑन योर ओन. ओके, आई होप आपने अपना आंसर फाइनलाइज कर दिया होगा. शुड देयर बी जॉब रिजर्वेशन फॉर women इन इंडिया, फॉर women नॉट इन इंडिया, सॉरी. यस, बिकॉज women आर द वीकर सेक्स. अब देखो, जैसे आप वो रिलीजन को ऐसा नहीं बोल सकते वैसे ही आप women को वीकर सेक्स कैसे बोल सकते हो? इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से. तो फर्स्ट आंसर, आंसर भले ही सही हो, भले ही यू फील दैट यस रिजर्वेशन, बट ये यूसेज गलत है, बात करने का तरीका गलत है. ओके, एंड सेकेंड में जो दिया है द होल बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इज दैट एंटायर कम्युनिटी विल बेनिफिट. दिस हैज बीन प्रूवन फॉल्स. देखो यूजुअली ना आर्ग्यूमेंट के एग्जाम्पल्स में अगर आपको ऐसा प्रूवन वगैरह दिख रहा है, ठीक है, समथिंग इज ऑलरेडी प्रूवन, then you are not going to oppose it because if a thing is already proven it's going to be right. Okay, so second one जो है that's going to be right, your answer is going to be 2. Try the next one. So should cloning be discouraged by government? Was दिया है yes because research has proved. आ गया ना वापस proved. So it's going to be right. No, because human reproductive cloning has the potential to solve all infertility problems. अब all थोड़ा ज़्यादा हो गया. How can you say कि एक तो cloning मतलब ना आप ही की तरह और एक बनाना, ठीक है? Let's say you are a student, I create a same ditto student like you, or I create a same laptop like I have. Not actually by manufacturing it, but cloning is creating a replica. ठीक है, तो क्लोनिंग से सारे फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाएंगे?
all थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, right? So that cannot be the answer. Your answer is going to be 1. Try the next one. This one is funny. Okay. Should there be a complete ban on polythene bags? Yes, because the bags cannot be recycled and they cause irreparable damage to the environment. Makes sense. Second, because housewives love it. How can we say that housewives love it is like bag ban mat kar do? Of course, second one is completely absurd. So answer is going to be 1. Next. कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी, उसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं. ओके, चलो. Should India do away with capital punishment? Yes, because expert and study have emphasized on the lack. Again, यहाँ पे भी experts आ गया. So anything which the experts have said, it's going to be true because they are an expert of this thing. ठीक है? It's just like the proven वाला चीज. No, because if attached to crime, डू अवे मतलब बेसिकली स्टॉप. हाँ, मतलब खत्म कर दो, अभी किसी को फांसी की सजा दो ही मत. तो नो बोल रहा है कि नहीं, स्टॉप नहीं करना चाहिए. बिकॉज इफ अटैच टू वायलेंट क्राइम्स द पेनल्टी ऑफ डेथ एक्सर्ट्स अ पॉजिटिव मॉरल इन्फ्लुएंस. मतलब लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा प्रेशर आता है कि अरे नहीं नहीं, लेट मी बिहेव इन अ सर्टन वे वगैरह. तो दैट इज वाई सेकेंड वन जो है वो यहाँ पे दे आर सेइंग कि सही हो सकता है. ठीक है, ये समझ में आया कि अगर कोई कुछ बड़ी चीज कर रहा है, ओके, एंड उसमें हमको पता है कि मर्डर करने से मुझे फांसी की सजा हो सकती है, तो उसके वजह से हमको थोड़ा तो प्रेशर आएगा कि ये ना मैं छोटा मोटा क्राइम नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए फांसी की सजा होती है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है. सो मे बी आई शुडंट डू दिस, क्योंकि बाकी सब छोटा चोरी वेरी तो आई कैन डू एंड आई मैं, मतलब जो सीजन क्रिमिनल्स है दे विल बी लाइक आई विल स्टे इन द प्रिजन एंड कम आउट. फांसी की सजा का थोड़ा तो डर लोगों को होगा. सो सेकंड इज आल्सो राइट, सो आंसर विल बी 3. नेक्स्ट. Okay, should Indian Railways be privatized? Yes, because successive governments have put nothing. अब देखो nothing मतलब ऐसा, nothing का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया. Nothing का मतलब है have not done enough. Okay, तो is this right or not? Yes, of course. कि they have not done enough तो करना चाहिए. Second बोल रहा है because the service will deteriorate and safety will be compromised. How can we say कि privatization से safety deteriorate होगी? So many sectors have been privatized, so the answer will be 1. Next. Is romantic love a good basis for marriage? Yes, because arranged marriages are oppressive, inhuman, unfair, and immoral. बाप रे, how can we say कि सारे arranged marriages oppressive, inhuman, unfair? थोड़ा ज़्यादा हो गया. So first cannot be the answer. Second is saying nearly all couples learn to live. Now see, this confirms with our system. We know that mostly no, all couples learn to live and love each other. So answer will be second. Next.
ओके, शुड गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट एरियाज बी प्रिजर्व विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस ना किए बिना. यस, दिस फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज विद इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक वैल्यूज, राइट? नो, बिकॉज इट विल सीवियरली लिमिट द मीन्स ऑफ ट्रैवल एंड द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर. अरे तुम्हारा ट्रैवल लिमिट होगा इसीलिए हम झाड़ काटे. सो सेकंड कैन नॉट बी द आंसर विल बी वन. नेक्स्ट. Should every college student be required to study history? Yes, because this would expose them to broad civilization. Makes sense. कोई problem तो नहीं है reasoning में. No, because a student may simply not be interested. Student may not be interested, इसीलिए we can't just stop them from getting the college degree. So answer cannot be two. It will be one. Last one. Okay, should students have a say in the determination of college policies? Yes, because they have the most intimate and direct knowledge. Makes sense. No, because they lack knowledge. They lack knowledge, they are just asking you for a say. That doesn't mean that if you say something, they're just going to implement. It's just having a say, right? So that it doesn't mean that you lack knowledge and experience to run the college. You're not going to run the college, right? So answer will be one only. Okay, I hope you have understood arguments. यहाँ पे we finish arguments. So remember guys, when you're solving, just a minute. When you're solving arguments, always remember, don't just compare the two arguments that are given. Always उनको अपने अपने मेरिट पे जज करो. ऑल्सो आपको क्या लगता है, आपको यस नो लगता है, दैट्स नॉट गोइंग टू मैटर हियर. रीजन क्या है वो मैटर करता है. सो समथिंग यू मे जस्ट नॉट एग्री विद, आपको लगेगा कि अरे दिस इज एब्सर्ड, बट उसका रीजन सही होगा, दैट विल बी द आंसर. समथिंग यू मे फील कि ये सही है लेकिन रीजन कुछ तो बकवास दिया रहेगा, देन दैट्स नॉट गोइंग टू बी आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट इज प्रोबेबली ट्रू प्रोबेबली फॉल्स. यहाँ पे वी आर गोइंग टू चेक द डिग्री ऑफ फॉल्सिटी और ट्रूथ ऑफ एनी सेंटेंस. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया रहेगा. ओके, नॉट नेसेसरीली कि वो स्टेटमेंट की वजह से ही वो कंक्लूजन आया है, आपको डिग्री ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सिटी चेक करना है. दीज आर गोइंग टू बी योर ऑप्शंस. डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको सिखाऊंगी. अगर आपको लगता है कोई 100% ट्रू है, इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली ट्रू. इफ समथिंग इज श्योरली रॉन्ग, इट्स डेफिनेटली फॉल्स. मोस्टली होगा तो प्रोबेबली ट्रू, अगर मोस्टली गलत होगा तो प्रोबेबली फॉल्स. एंड इफ इट इज anything absurd, then it's going to be data inadequate. Let's understand this with an example. R is a man. R is immortal. All men are mortal. आप ट्राई करो और बताओ आपको क्या लग रहा है. Okay. R is a man. R is mortal. Okay. All men are mortal. Now, देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, कंक्लूजन जो है वो एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है, हमें कुछ नहीं पता है सारे मेन मॉर्टल है या नहीं है, क्योंकि बाकी के मेन के बारे में तो हमें बताया ही नहीं है. तो वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. सो ऑब्वियसली अगर वी हैव नो आइडिया, डेफिनेट ट्रू या डेफिनेट फॉल्स तो हट जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो. ओके, सो डेफिनेट वाले जो भी है वो यहाँ से चले गए. नाउ एक बार आपने डेफिनेट ट्रू डेफिनेट फॉल्स एलिमिनेट कर दिया, सो डेटा इनएडिक्वेट है कि नहीं देखो. ओके, सो आंसर यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट कब होता है, जब
डेटा किसी एक चीज के बारे में दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आर के बारे में डेटा दिया है, ओके, और कंक्लूजन किसी दूसरे ही चीज के बारे में है, जैसे मैन के बारे में, ठीक है, आर मैन है, लेकिन कंक्लूजन ऑल मैन के बारे में है। अब ये बहुत ही ज्यादा जनरलाइज हो रहा है, मुझे ऑल मैन के बारे में कोई डेटा नहीं है मेरे पास, सो इट्स गोइंग टू बी डेटा इनएडिक्वेट। ये समझ में आया? ट्राई दिस। Okay. Pens are used for writing. X is not used for writing. X is not a pen. Okay. यहाँ पे भी DT and DF which is definitely true, definite false is eliminated. क्यों? क्योंकि pen is used for writing, X is not used for writing. अब X 100% मेरे को गारंटी है क्या कि X is not a pen? X ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पेन है बट राइटिंग के लिए यूज नहीं करते उसको, बस पड़ा हुआ है ऐसे ही खरीद के। सो नॉट नेसेसरी कि इट इज नॉट अ पेन, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स पेन है, ओके, एंड इट इज नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग, एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक्स नहीं है पेन, इट्स समथिंग एल्स। सो डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स तो चला गया, ओके। अब यहाँ पे अगेन डेटा इनएडिक्वेट कब होता है, जब डेटा स्टेटमेंट जो है वो इनकंसिस्टेंट है या फिर दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कॉन्क्रीट एविडेंस, ओके। सो यहाँ पे भी अगर आप देखो आपको 100% उस पेन के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ये एक्स जो है हमें सिर्फ इतना पता है इट इज नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग। पेन आर यूज्ड फॉर राइटिंग, बट हैव दे सेड दैट पेन्स आर यूज्ड ओनली फॉर राइटिंग? पेन का और कुछ जिंदगी में काम ही नहीं है, पेन को सिर्फ लिखने के लिए यूज करते हैं। देखो तुम्हारा कॉमन सेंस यूज मत करो, आपको पता है कि पेन लिखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो कॉमन सेंस उन्होंने नहीं पूछा है। उन्होंने तुम्हें यहाँ पे पूछा है कि ये जो यूनिवर्स है, जो इनका क्वेश्चन वाला, इसमें पेन को राइट करने के लिए यूज करते हैं। अब इनके यूनिवर्स में मुझे नहीं पता कि पेन को सिर्फ लिखने के लिए यूज करते हैं या उसको शोकेस की तरह यूज करते हैं या उसको खड्डा करने के लिए यूज करते हैं, वट एवर इट्स यूज फॉर, पेन फाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्सो ओनली पेन्स आर यूज फॉर राइटिंग ये भी नहीं बोला है, ठीक है, कुछ और भी चीजें होंगी जो राइटिंग के लिए यूज होती है। सो एक्स इज नॉट यूज फॉर राइटिंग, इससे कुछ साबित नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी डेटा इनएडिक्वेट। ओके, आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग गाइस, बट बाय प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, डोंट वरी। चलो ट्राई द नेक्स्ट वन। ओके, CPSC students are either students or professional. X is a CPSC student. तो अभी is he a professional? अब देखो, कोई भी CPSC का बच्चा एक तो एक स्टूडेंट ही रहता है या फिर वो एक प्रोफेशनल रहता है। तो अगर कोई CPSC का बच्चा है तो वो एक प्रोफेशनल होने के चांसेस कितने हैं? 50-50, क्योंकि स्टूडेंट भी हो सकता है प्रोफेशनल भी हो सकता है। 50% चांस पे अगर हम चल रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी प्रोबेबली ट्रू, ओके। Just read the explanation quickly. Clear? All right. So इतना difficult है नहीं. It's just that you need to apply a little bit of brain here while solving. So चलो, we will start with probably true, probably false solving. ये options ज़रा एक बार आप लिख लो कहीं पे तो, because we will not be coming back to this page. हम directly ऐसे ही solve करेंगे जो हम कर रहे थे ना, ऐसे 1 2 3 4 5. Okay. So just note down this option somewhere.
ओके, चलो। For every question, I'll give you few seconds कि आप try करो and then I'll explain. Okay? Okay. All right. So, Joe is a professor in MIT. Some professors in MIT are Nobel laureates. Joe is not a Nobel laureate. अब देखो, MIT में जो प्रोफेसर है, ठीक है? Some professors are Nobel laureate. अभी some का मतलब क्या होता है? Some is doesn't mean a lot of them, right? थोड़े से few हम बोल सकते हैं. तो बहुत ही कम लोग जो है, they are Nobel laureate. तो जो Nobel laureate ना होने के chances कितने हैं? ऑलरेडी कम लोग नोबल लॉरेट है, दे आर नॉट सेट दैट मोस्ट ऑफ देम आर, सम बोला है, तो ऑलरेडी कम लोग है, उसमें जो नोबल लॉरेट होने के चांसेस कम है, राइट? तो जो इज नॉट अ नोबल लॉरेट, इसके चांसेस कितने हैं? ध्यान से सुनो, कम लोग नोबल लॉरेट है, ठीक है, बहुत सारे नहीं है। तो जो नोबल लॉरेट होने के चांसेस अगर हमें पूछते तो हम प्रोबेबली फॉल्स बोल देते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम लोग ही नोबल लॉरेट है। बट जो नोबल लॉरेट ना होने के चांसेस ज्यादा है, सो इट्स प्रोबेबली ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट वन। ओके, so good communication skills are an important skill for a good manager. अल्पेश अच्छा मैनेजर है, तो good communication skills उसमें हो सकते हैं, तो probably true आता। बट ऑप्शन कंक्लूजन में दिया है अल्पेश must have good communication skills। अब जब must आ गया ना गाइस, तो थोड़ा सा नेसेसिटी आ जाता है। उन्होंने सिर्फ बोला इट इज इम्पोर्टेंट, उन्होंने ये नहीं बोला है कि होने ही चाहिए। मस्ट इज टू मच, हेंस इट्स प्रोबेबली फॉल्स। Try the next one. ओके, स्केटिंग ऑन स्नो इज वन ऑफ द मेजर फन एक्टिविटी। अभी मेजर मतलब क्या, 90% लोग तो यही करते होंगे। ही इज ऑन हॉलीडे एंड इज इन स्विट्जरलैंड, तो मोस्टली तो वो स्केटिंग ही कर रहा होगा। बट यहाँ पे ना द वर्ड मे बी प्लेज अ रोल। अगर हम यहाँ पे बोलते ही इज स्केटिंग ऑन स्नो, तो हम प्रोबेबली ट्रू बोलते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग अगर वही कर रहे हैं तो ये भी वही कर रहा है।
but maybe matlab kya, you are asking ki what is the probability of the probability that he's skating. Okay, so the chances that he might be skating to pure hai, chances he not might be skating bhi pure hote hain, chances of anything are full, so answer is going to be probably, definitely true. So whenever you come across these words like maybe, probably, remember the answer is going to be definitely true. Next. Okay, so most politicians are corrupt. Okay, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा corrupt रहेंगे. Some politicians are industrialist. बहुत ही कम लोग रहेंगे जो industrialist है. What are the chances that कुछ politicians corrupt भी और industrialist भी है? अब देखो, अगर हम ये देखें कि कितने पॉलिटिशियंस करप्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों रहेंगे, तो अगर हम सारे का सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी करप्ट बना दें, तो भी इंडस्ट्रियलिस्ट कितने हैं टोटल पॉलिटिशियंस में? सम, मतलब बहुत कम लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है. Right. So in this case, because the answer is just some few, so the answer will be probably false. Next. Okay. Now, the reason for increasing the high employee turnover is for occupational stress. मतलब यूजुअली इस कंपनी में लोग छोड़ के जाते हैं क्योंकि नाइट स्केड्यूल की वजह से उनको स्ट्रेस आता है. और ये जो मिस हेलन काम कर रही है वो भी अभी छोड़ के जा रही है, तो वो ऑल नाइट वर्क की वजह से जा रही है. देखो, डेफिनेट नहीं बोल सकते. ओके, because we don't know, we are not sure, but Miss Helen resigned because of all night work schedule. इसकी possibility तो high है, हमें sure नहीं पता लेकिन high chances है, so answer is going to be probably true. Next. Okay, he is studying in US. Most Indians studying in the US are postgraduates. अब ये यूएस में पढ़ रहा है, मोस्ट इंडियंस यूएस में पोस्ट ग्रेजुएट होता है, बट डू यू नो द नेशनैलिटी ऑफ दिस मैन? ही, ये ही इंडियन होगा तो प्रोबेबली ट्रू है, ये ही इंडियन नहीं होगा तो हमें कुछ पता नहीं है, सो वी डोंट नो ये ही कौन है. सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट, बिकॉज वी हैव नो आइडिया. There is a pickup facility for her to get to work. All call center employees have this facility. She is employed with a call center.
अब उसके लिए एक पिकअप फैसिलिटी है टू गेट टू वर्क, ठीक है। और कॉल सेंटर एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी है, लेकिन तुम्हें पता है क्या कि ये लड़की कहाँ पे काम कर रही है? सारे कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज को फैसिलिटी है, बट क्या उन्होंने ये बोला कि सिर्फ कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज को फैसिलिटी है? डू यू नो अबाउट एनी अदर सेक्टर उनको है कि नहीं? सो इफ शी इज, if only call centers have this facility, then the answer would be definitely true. If it's not just call centers, so you don't know, it can be probably true, probably false, hence it is data inadequate. Sandro is one of the two cars manufactured and sold by Hyundai. He owns a car manufactured by Hyundai. अब देखो, दो ही cars हैं इनके, Sandro और एक let's call it XYZ. Okay, he probably owns a Sandro. क्या chances है उसके Sandro own करने के? 50%. तो it's going to be probably true. बट इसमें एक वर्ड आया, देखो याद है हमने स्केटिंग के एग्जाम्पल में सीखा था, ही प्रोबेबली ऑल्सो दे आर आस्किंग व्हाट आर द चांसेस of the chances of him owning a sand, तो वो तो पूरे होते हैं, so answer is definitely true. Next. Okay, conditions on earth support life. जो कंडीशंस अर्थ में है वैसे ही कंडीशन मिलियंस प्लैनेट पे, अब तुम सोचो मिलियन प्लैनेट, मिलियंस, मिलियंस मतलब बहुत ज्यादा हो गया गाइस। सो लाइफ एग्जिस्ट ऑन एटलीस्ट वन प्लैनेट, एटलीस्ट एक प्लैनेट पे लाइफ होने की चांसेस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? डेफिनेट हमको पता नहीं है, क्योंकि श्योर शॉट अभी तक कुछ आया नहीं है कोई एलियन दादा। सो इट्स नॉट डेफिनेट ट्रू और डेफिनेट फॉल्स। तो डेटा इनएडिक्वेट की भी वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी गिवन इट इन द क्वेश्चन, इट्स ईदर गोइंग टू बी प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स। अगर मिलियंस ऑफ प्लैनेट पे वैसे कंडीशंस है, तो एटलीस्ट एक प्लैनेट पे वो होने के चांसेस हाई है, सो इट्स प्रोबेबली ट्रू। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस। Okay. Lions are unique in that they are the only, notice the word only, okay? Only cats to live in group. मतलब lion is the only cat. अगर तुमको कोई cat दिखती है जो ग्रुप में रहती है, तो वो lion ही होगी, क्योंकि lion is the only cat जो ग्रुप में रहती है। इसका मतलब बाकी की cat कोई ग्रुप में नहीं रहती, और अगर कोई cat ग्रुप में रहती है तो वो lion है। Okay, so lion is the unique as it's the only cat that lives in group. कैट्स फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका लिविंग इन ग्रुप। नॉर्थ अफ्रीका में जो कैट पाई जाती है वो ग्रुप में रहती है। तो आपको क्या लगता है, नॉर्थ अफ्रीका की जो कैट है जो ग्रुप में रहती है वो कौन होगी? वो लायन ही होगी। सो द कैट्स फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका आर लायंस। इट इज डेफिनेटली ट्रू because it's given that they are the only cats. Okay, so that is all guys. This is advanced reasoning 2 जो है, arguments हो गया या probably true false हो गया, is pretty interesting वैसे। if you try to develop an interest and solve it, it's not समथिंग विच इज़ वेरी बगाव, बट इट्स जस्ट आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर्स को देखना है, कैसे टैकल करना है। ऑल्सो रीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम, सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट फ्रॉम योर बुक्स। ऑल राइट, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन।